हेलो गाइस, वी आर बैक विद न्यू वीडियो। आज हम वीडियो में देखेंगे वो जो एरर आती है ना, नेटवर्क एरर फेल, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको नोड में वो एरर आ रही है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो नोड में देखो, अभी मुझे एरर आ रही है नोड के अंदर, एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। ओके, तो अभी हम आईपी कंफिग करेंगे। आप देखो, यहाँ पे इथानेट का एड्रेस आ रहा है। ओके, ओके, अब मेरा मोबाइल का भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हम सेटिंग्स में जाएंगे। मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं इथरनेट सेटिंग्स। ओके, मेरा एमआई का फोन है। आप फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। फिर से ट्राई कर लें। नाउ अभी हम क्या करेंगे, फिर से वो कमांड रन करेंगे आईपी का। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको इथरनेट के एडेप्टर के दो IPv4 एड्रेस मिलेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे है ये वाला, इसे हम कॉपी करेंगे और हम अपने नोड वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे। और यहाँ पे जो है हम चेंज कर देंगे। पॉट सेमी है, हमने इथरनेट कनेक्शन नहीं यूज किया था इसलिए वो एरर आ रही थी। तो इथरनेट कनेक्ट करके आप वो एरर सॉल्व कर सकते हो। तो अभी नोड को रन करते हैं। आप देखोगे कि ये एरर सॉल्व हो जाएगी। अगर अभी ये एरर आपको एक्सपो में भी आ रही है, आप रिएक्ट नेटिव यूज कर रहे हो और एक्सपो में भी सेम ही एरर आ रही है, तो भी सेम ही प्रोसेस है। आप इंटरनेट से अपने मोबाइल को कनेक्ट करो और वो आईपी कॉन्फ़िग लिखो, और वो जो एड्रेस आ रहा है उसे कॉपी करके आप नोड में अपने एपीआई में सेट कर दो, और वही जो आपने राउट सेट किया है यहाँ पे, वही आप एपीआई में कॉल करवा दो। जैसे सेम एज हियर हमने यहाँ पे कॉल करवाया। ओके, देखो ये स्टार्ट हो चुका है। सेम एज एक्सपो में चले जाते हैं, देखते थे हमारा स्केल करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे बिल बन रहा है, यहाँ पे रन हो रहा है।
आपको कनेक्शन करने के लिए इथरनेट सेटिंग्स का यूज करना होगा, राइट। इससे आप अपने नोड की एरर भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे पोर्ट वाला इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा और नेटवर्क एरर पिन वाला इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारी एक कॉल होगी, एक कोऑर्डिनेट पे वेलकम पेज पे आ गए तो और भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का सब्जेक्ट, हाउ टू सोल्व नेटवर्क रिक्वेस्ट है। ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पे कोई और पॉट यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा ही आएगा। वायरलेस लैन वाईफाई, तो हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे भी चेंज करते हैं और यहाँ पे फिर से नोड को स्टार्ट करते हैं। मैंने नोटबुक इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। आप नोटबुक इंस्टॉल कर देंगे तो आपको ये बार बार रन नहीं करना होगा। ओके, ये स्टार्ट हो चुका है। अभी हम देखते हैं क्या होगा। मतलब एरर है, राइट। मे बी एक और ही मीटिंग है, इंटरनेट सेटिंग्स को यूज किया तो मैं वही आईपी यूज करूँगी। ये इंटरनेट का चेक इससे ऊपर अपने को ये ऑटोमेटिकली लोड होता है। See, type and network request. Okay,
तो इसी के लिए हमें आईपी कौन सा आईपी यूज करना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। हमें यहाँ पे एडेप्टेशन ने यूज किया इसलिए हमें यही आईपी यूज करना होगा 164 IPv4 एड्रेस। ओके, hope it helps you guys। चलो मैं प्रिपेयर किया था। अभी घंटे ये अभी डिसमिस करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये एरर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई एरर आ रही है ऐसे ही कोई, तो आप कमेंट में जरूर बताइए जिससे मैं इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द कर पाऊँ और आपको भी उसे शेयर कर पाऊँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।